For all the latest updates, subscribe to News 9. Continuing with its tirade against standoff with China along the border in Ladakh, Congress MP Adhir Ranjan Chaudhary has hit out against the Chief of Army Staff General M.M. Narvane. Referring to the remark made by the Army Chief on June 13th that the military talks between the two sides have been very fruitful and the situation will improve further, Chaudhary questioned his claims. Very fruitful मतलब क्या है? मतलब कामयाबी का ये एक दिशा दिखाता है, वेरी फ्रूटफुल। तो मैं इसी जो लफ्ज इसके भाई विरोध करता हूं इसलिए कि अभी तक चाइनीज आर्मी ने हिंदुस्तान की जो क्लेम एरिया है, हम जो एरिया दावा करते हैं 8 फिंगर तक चीन अभी कब्जा करके रखा है। The Congress leader claims China and India's military commanders meeting on June 6th was held in the area occupied by Chinese army. और जहां दोनों पक्ष, हमारे आर्मी के जब मीटिंग हुई दोनों पक्ष, वो मीटिंग खबर के मुताबिक चाइना जिस एरिया अभी तक अपना कब्जे में रखा है उस कब्जे वाली इलाका में ही ये मीटिंग हो रहा है। तो हम कैसे ये कह सकते हैं कि हमारे साथ चीन का वार्ता वेरी फ्रूटफुल। Chaudhary said that the army chief should refrain from using self-satisfying words. ये मैं नहीं, हमारा डिफेंस एक्सपर्ट सब कहते हैं। इसलिए इलाका जो हमारे पेट्रोलिंग आज कुछ दिन पहले तक कर रहे थे, वो इलाका चीन जबरदस्ती कब्जा करके रखा है। सैटेलाइट कहते हैं, डिफेंस एक्सपर्ट कहते हैं, हमारे बड़ा अधिकारी कहते हैं। तो इसी हालत में आर्मी चीफ को बात में थोड़ा संयम रखना चाहिए। Party spokesperson Randeep Surjewala also criticized the Modi government's handling of the border standoff with China by taking a jibe at Defence Minister Rajnath Singh. Stop insulting India, Rajnath Singh ji. India was, is and will always be strong. Problem is, a strong India has a weak government. Defence Minister Rajnath Singh, while addressing a virtual rally in Jammu and Kashmir on Sunday, remarked that India and China wanted to resolve the issue peacefully. He asserted India was not a weak country anymore, which invited Surjewala's criticism. The army chief, in an interaction with the media, had assured that the entire situation along the borders with China was under control and that the process of disengagement had begun.